Very good morning, dear students. So today we'll be doing English grammar in that chapter 31, words often confused. ठीक है, we had begun with indirect direct that will be doing in the live teaching session. Now for today you will be doing these chapters, that is, one is words often confused and another one is synonyms and antonyms. So just go through the whole video. Clear? Okay. There are certain words, okay, in the set of words in English grammar as well as in English. There are certain words which are pronounced in a same pattern. ठीक है, जिसको हम pronounce करते तो उसका sound एक जैसा आता है, but the spelling, the meaning or any other thing is different. Okay, yeah, so those words are known as homophones. ठीक है, तो होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हो, दो अलग अलग वर्ड आप बोलोगे तो उसका साउंड एक ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल BAIL बेल and BALE बेल, both have the same spelling. PAIR pair and PARE pair, they also have the same pronunciation. Okay, the spelling is different, so such words are called homophones, जिसके pronunciation same होते हैं but meaning और spelling differ कर सकता है. ठीक है, so here in this chapter we have been given a list of such homophones. Okay, you have to go through it. There are 40 homophones. These are the certain words which confuse us कि कौन सा आएगा. ठीक है, कब यूज़ करना है, तो मीनिंग पता तो यू कैन ईजिली यूज़ इट. सो लेट्स मूव ऑन. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. एक्सेप्ट इज टू एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री विथ एंड एक्सेप्ट मीन्स उनके अलावा. एक्सीडेंट, incident. Accident is a very serious accident took place in front of our house. Anticipated, कुछ incident होता है जब तुम expect ही नहीं करते कुछ हो गया. Yeah, that normal accident मीन्स जो हम एक्सीडेंट टर्म करते हैं वो. हाँ, इंसिडेंट मीन्स व्हाट, सम अपने लाइफ का कोई इंसिडेंट आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, मतलब कोई किस्सा बता रहे हो. हाँ, दैट इज़ अ केस ऑफ इंसिडेंट. देन आंसर एंड रिप्लाई. वी आंसर अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा हो तो हम आंसर करते, बट वी रिप्लाई टू अ लेटर, मेल, स्टेटमेंट. दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन एक में हम रिप्लाई दे रहे हैं. कोई किसी ने आपको लेटर किया भेजा, किसी ने आपको मेल भेजा, कोई स्टेटमेंट भेजा, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज़ रिप्लाई. बट समवन हैज़ आस्क्ड यू क्वेश्चन, यू आर आंसरिंग. Clear? Assure and ensure. Assure is to convince. You are assuring that everything good will happen, तो आप convince कर रहे हो, दिलासा देना. हाँ. Then insure is to guard against loss. Yeah, इंश्योरेंस वाला. We got our home insured against fire, मतलब कुछ लॉस के अगेंस्ट में कंपनसेटिवली मिलना है. ठीक है. Award and reward. Award is a kind of honor that is bestowed for doing something distinguished. Reward is something given in return for some good done by a person. अगर किसी ने कुछ अचीवमेंट किसी को मिला है तो वी अवार्ड देम. एंड रिवॉर्ड इज इफ यू हैव डन समथिंग गुड और समथिंग हेल्पफुल डिड, यू गेट अ टोकन ऑफ थैंक्स, अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड. ओके. Yes, the next is board and board. The teacher wrote that difficult words on the board, means that is blackboard. And another board is you are getting bored. Yeah, we were bored by the long and dreary speech. Cast is an cast and cast. One cast is CAST, cast, that is to throw. You are throwing the garbage. Yeah, the fisherman cast a net to catch fish, मतलब ऐसे बिछाना. ठीक है. एंड वी कास्ट आवर वोट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो मीनिंग. वी कास्ट, यस, वोट देने जाते हैं तो वी कास्ट अ वोट. द नेक्स्ट इज कास्ट, CASTE, अ ग्रुप और क्लास इन एंशियंट इंडिया. हाँ, स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करना, वो कास्ट. तो कास्ट वर्ड के तो 3 मीनिंग है. एक है टू थ्रो, another is we cast our vote, and the last is CASTE, caste, that is religion वाला caste, मतलब you belong to this, तो categorization वाला caste. Okay, next is childlike and childish.
Childlike is like a child and childish is like a child. Okay. Childlike पॉजिटिव सेंस में मतलब कोई वो लोग अगर रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हो ओबे कर रहे तो ही इज़ अ चाइल्ड लाइक पर्सन मतलब ही इज़ इन अ पॉजिटिव वे उसकी तारीफ करें. एंड somebody is behaving very immaturely then you can say that yes we can say that you are like a child, that means you are immature. Okay, next is coarse and coarse. Coarse is the rough, yeah it's rough. His language may be coarse but he is innocent at heart. And another is course, that is a prescribed syllabus we have for exam, test, etc. Okay, yeah. Compliment, that is an expression of regard and compliment, COMPLEMENT, that which completes. ठीक है, एक compliment LIMENT वाला compliment मतलब तारीफ और LEMENT मतलब जो complete करता है. Continual, continuous. Continual means following quickly and continuous is without break. Next is counsel and counsel. Counsel is assembly and counsel is advice. Custom and habit. Custom is some kind of ritual which is followed by the people in various places. Okay, रीति रिवाज बोलते हैं ना वो. And habit refers to the regular routine करने से वो हमारी आदत बन जाती है. So that habit is nothing but the आदत that will refer to a person, particular individual. Next is deny and refuse. Deny means the truth of a statement. सच मतलब ना ही बोल देना और रेफ्यूज़ मतलब टू डू अ थिंग. शी रेफ्यूज़ टू लैंड मतलब कुछ काम करने से तुम इनकार करते हो तो वो रेफ्यूज़ हुआ. लेकिन कुछ स्टेटमेंट के साथ तुम अगर एग्री नहीं करते तो वो डिनाई हुआ. ठीक है. डेजर्ट एंड डेजर्ट. DESERT डेजर्ट इज अ सैंडी रीजन. थार डेजर्ट, देन सहारा डेजर्ट एक्सेट्रा. देन डेजर्ट DESSERT वाला जो है द स्वीट डिश आफ्टर द main course. Yes. Doubt and suspect. Doubt is to be uncertain. When we are uncertain about something we have the doubt. And suspect is to imagine that there is some guilt. और suspect है कि हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है. So that is suspect. Farmer and farmer. Farmer is a person who does farming activities and farmer is first in position. पहले का farmer, the one who is standing in farmer means आगे जो खड़ा है. Famous and notorious. Famous means what? बहुत अच्छी reputation होना, pomp होना. Notorious means having evil reputation. जिसकी अच्छी reputation नहीं होती वो notorious, not a kind of person. Then graceful and gracious. Graceful is pleasing. Our new English teacher has a very graceful personality. मतलब pleasing, किसी को भी अच्छा लगता है ऐसा. Happily you are with that person. That is called graceful. And gracious is kind. When you are kind, that actions are known as gracious. Then hail and hail. HIL, hail is frozen raindrops. ठीक है. HILE, hail is healthy. Then honorary and honorable. Honorary is holding an office without receiving any pay. कुछ पेमेंट नहीं है बस तुम बैठते हो ऑफिस को मैनेज करते हो. एंड ऑनरेबल इज वर्दी ऑफ ऑनर, जो जिसको रिस्पेक्ट एंड फेम सब मिलता है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियल इज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियस इज हार्ड वर्किंग. Lesson and lesson. LESSE and listen is to reduce and lesson is a chapter from a book. Okay. हाँ. Then loan. My father took a loan. LOAN, loan wala. And other is loan. That is the only one. She was a lone worker in the field at that time. Only के लिए भी हम loan use कर सकते हैं. Lovable and lovely. Lovable is worthy of love, जो love करने लायक हो. And lovely is beautiful. Memorable and memorial. Memorable is worth remembering, जिसको याद करना चाहते हो. And memorial is some statue or building that preserves the memory of someone. किसी की याद को संभाल के रखना. So that building will slate as memorial. Okay. ओर एंड ओर. OAR, ओर इज ऑफ अ बोट. बोट का ओर होता है ना जिससे हम ऐसे
पानी पीछे को ऐसे पुश करके बोट को आगे ले जाते, दैट इज ओर. एंड ORE, ओर इज मिनरल. नेक्स्ट इज popular and populous. Popular is famous and populous is full of people. Populous. Next, poor is poor and poor. PORE, poor is very small hole. ठीक है. And poor means to pour into something, किसी में डालना. Profit and profit. Profit means gain and prophet is someone who predicts about future. Propose and purpose. Propose is to make a suggestion and purpose is the objective. Okay, yeah. Remember and recollect. Remember is to keep in mind and recollect is to recall. जो माइंड में इकट्ठा करके उसको रिकॉल करना. Yeah. Next is reminder and remainder. Reminder is when we give the reminders, this much is left, this much time is left, a warning kind of thing. And remainder is no remainder in the वो division में remainder नहीं आता नीचे, वो remainder. Then respectable and respectful. Respectable is worthy of respect and respectful is showing respect. जो respect दिखाता है उसको respectful बोलते हैं. Then sensible and sensitive. Sensible is जो wise and intelligent हो. Sensitive is one who feels things very deeply. When you feel very deeply, yeah, that is a case of sensitive. And sensible is wise and intelligent. Then straight is direct and straight, a narrow passage of water between two सीज और ओशन. दो सी और ओशन के बीच में जो पतला लेयर ऑफ पानी जाता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं. पार्क स्ट्रेट. यस. देन सूट एंड स्यूट. सूट इज थिक स्मोक collected on a flat piece. स्मोक जब इकट्ठा होता है फ्लैट पीस पे, दैट इज कॉल्ड सूट. एंड स्यूट इज दैट वन वी वियर. SUIT, suit. Suite is also there. SUITE, that is a set of connected rooms. होटल suite होते हैं ना, हाँ, that suite. Then vacation and vocation. Vacation मतलब घूमने जाना, holiday. And vocation means profession. Vocational courses होते हैं ना, based on practical learning. Yeah. Next is vain and vain. VAIN, vain is proud या फिर idle. और VEIN, vain means a blood vessel. Yoke and yolk. Yoke is a wooden frame और बार. YOKE, yoke. Okay, हाँ, वो जो ऑक्स के वहाँ पे रखते हैं ना फॉर दैट कार्ट एंड ऑल, प्लोइंग का करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड yoke. दैट इज़ अ वुडन काइंड ऑफ स्ट्रिंग जिसके थ्रू ऑक्सेस को मैनेज करके रखा जाता है. नेक्स्ट इज ऑक्सन को. नेक्स्ट इज यॉक, द येल्लो ऑफ एन एग. येल्लो और यॉक होता है. Here 3 exercises are given. You will be solving it yourself क्योंकि आपको पूरा examples और जो भी है ये list में से मिल जाएगा. You do not need to copy any list in your notebook. Try to solve them. Exercise 1 and 2 you can, and 1 and 3 you can do in the textbook, and exercise 2 you can write in your notebook. Clear? Okay. Take care. Have a nice day.